मैं राजन कुमार हॉबी आइडियाज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एपन चेली कैसे बनाते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड का मशहूर कला एपन चेली। तो चलिए सीखते हैं दीपावली के अवसर पे कैसे एपन चेली बनाते हैं। चेली एपन बनाने के लिए सामग्री लेंगे एनामेल पेंट, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। ब्रश लेंगे, एक फ्लैट ब्रश, छोटा फ्लैट ब्रश और एक पॉइंटेड राउंड ब्रश। ये सामग्री जो है चेली एपन बनाने के लिए चाहिए। अब चलिए चलते हैं चेली एपन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि इस सीढ़ी पे बनाना है मुझे लक्ष्मी चरण पादुका एपन, तो इसकी चौड़ाई नापेंगे। 60 इंच है ये, 59। तो इसके लिए यहाँ सेंटर लेंगे और सेंटर लेने के बाद दोनों साइड जितना बनाना है 1 फीट इधर और 1 फीट इधर। चरण पादुका के लिए प्लेट का यूज़ कर सकते हैं आप, छोटे छोटे प्लेट का यूज कर सकते हैं। अब मेजरमेंट के बाद इसको रेड कलर से पूरा भर देते हैं, कलर से पूरे रेड कलर से इसको भर देते हैं। अब लाल पेंट का बेस सूखने के बाद
फिर ऐसा किए तुम्हारे फिर इस सीढ़ियों पर बना हुआ है।
तो इस तरह आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी चरण पादुका बना हुआ, और ये सीधे पूजा घर की ओर जा रहा है, और ये पूजा घर के पास चढ़ा गया। तो इस तरह से आपने सीखा चेली ऐपन कैसे बनाते हैं।